In continuation with the happiness series, last time I received two questions regarding handling the relationships, and I would like to cover both of them in this topic. One of them was about the toxic relationships and how to handle the toxicity, because that's a big hurdle in the way of happiness. And the second one is that we get into the matrimony or into any other relationship with the concept in the mind that somewhere we will connect emotionally, mentally, and physically. And out of these three connections, usually the mental connection or the mental connectivity is missing, and which really irks the one of the parties or both the parties, I might say, for the fulfillment of the relationship. So I handle both these things together, and both these things together can be handled in two ways. One is how to handle the toxicity in a very smart way, intelligent way, and the other is how to handle it spiritually. And we can actually apply both the techniques, and we can actually follow both ways. Now, first, I come with a very beautiful example in handling the toxicity with a little anecdote. Once there was a employee in a big corporate company, and he goes to his CEO and tells him that I want to quit the job. The CEO was very wise man, mature man, and he wants an answer to this. And after a little hesitation, the employee comes out that there is a lot of negativity in the institution, in the office. There is a lot of politics happening, there is a lot of gossiping happening, and I have tried my best to handle it, but now I am not able to sustain it, and so that's why I want to quit it. Okay, the CEO says, okay, fine, but before you leave, do one more favor to me. I really want to give you a job, and you fulfill this job, and then you are ready to leave. So that job is that he gives that employee a glass full of water, and the glass is filled till the brim, and then he says to the employee, now you take 3 rounds in the compound of the office with this glass in your hand, but keep it in mind that the water should not spill down and out. After he completes the 3 rounds, and he comes to the CEO and he says, now I have fulfilled the task. Now the CEO asks, now while you were taking the rounds, did you see any of the employee talking? He says, no. Now, did you see any of the other employees making any comments to anyone? He says, no. Now, did you see any of the employees in the office fighting with each other? He says, no. So he says, the answer is that once your priorities change, because your focus was now on the glass full of water, and the task was that it should not spill out. Your focus was entirely on the glass, and your focus shifted from the other employees. So that is the answer. Keep your priorities in your mind and do not lose your focus. Once your focus is clear, all other things, all the other toxicity will go into the background, and it will not disturb you. I am not saying that do not try your best to change the circumstances. Try your best, but even after trying your best, if this task is not accomplished, because the world is full of toxicity, wherever you will go for the new job that will offer you with the new complex situations and a different type of toxicity. So leaving the job, leaving or coming out of the relationships is not an answer. Just fix your focus so that it
should not or it does not disturb you. Now I come to the other question, and along with handling the toxicity in a spiritual way. Before this, I want to stress upon that what is our human body made up of, and what purpose we have got in this human life, that will really help us understand the answer to this question. ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिस्कस करिए या जे समझने की कोशिश करिए तो यह 3 लैवल्स के उत्ते समझा जा सकता है। एक तो मोटा लैवल है जिदे बारे सानू सबनों पता है, तन, सैकेंड इज मन, तो तीसरा है आत्मा। तन सब दा वखरा वखरा है, तन के उत्ते असीं सब अलग अलग हाँ। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि असीं तन के लैवल के उत्ते एक दूसरे नाल कनैक्ट करिए, बिकॉज भावें 5 अरब की पॉपूलेशन है पर अज भी जोड़े नवे बच्चे पैदा हो रहे होंगे उन्होंने भी कोई रिसैम्बलेंस किसी प्रीवियस बीइंग नाल नहीं होएगी। इट इज़ वेरी वेरी यूनिक। इट इज़ यू नो डायरेक्टली फ्रॉम योर फिंगरप्रिंट्स यू नो दिस दैट नो 2 people are alive। So to connect at a level which is called the physical level, that connection will be very very temporary, changeable, and it cannot last for a longer time because तन जेड़े ने वो बदलते रहते ने and they get perish। So जेड़े रिश्ते सिर्फ एंड सिर्फ फिजिकल बेसिस के उत्ते रखे होंदे ने वो बहुत जल्दी, भावें वो दोस्ती के रिश्ते ने, भावें वो रिश्तेदारी के रिश्ते ने, वो बहुत देर तक कभी भी नहीं चलणगे और बहुत जल्दी टुट जाते हैं। दूसरा लैवल है मन का लैवल। ना पहली गल समझण वाली है कि मन है कि मन विचारां दा, सोचां दा प्रवाह है जिहदे दे नाल साडीआं यादां बनियां होंदियां ने। किते किते यह पॉसीबल हुंदा है कि साडे विचार किसी दूसरे के विचारां नाल मिल जाते हैं, साडी सोचनी किसी दूसरे की सोचनी नाल मिल जाती है और असी किसी दियां यादां नाल बंधे जाने हैं और इक्वली वो इंसान भी साड़ियाँ यादां दे नाल बनिया जाता है। इनू मन का रिश्ता कहते हैं। पर जिस तरह 2 तन कभी इक्को जिक्के नहीं हो सकते, मन 2 इक्को जिक्के तो जरूर हो सकते हैं पर बहुत बहुत घट तादाद के विच। इत्थे असी जिंदगी दे विच गलती खा जाने हैं बिकॉज सारी उम्र साडी एक आस रही है, एक नठ भज दौड़ रही है कि असी अपना सोलमेट लभना है। दो द कंसैप्ट ऑफ द सोलमेट इज़ नॉट रॉन्ग बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द डे टू डे बेसिस। ज़रूरी नहीं है दैट योर स्पाउस और योर पार्टनर हैज़ टू बी योर सोलमेट इन ऑर्डर टू लिव लाइफ ब्यूटिफुली or with affection, and it is very very rare। जे 5 अरब की टोटल आबादी है तो बहुत घट लोग हैं ना, सिर्फ हज़ारां की तादाद सिर्फ होंगे जिन्हां दे विचार एक दूसरे नाल मिलते होंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मिसकनसैप्शन कि असी जे साडे मन मेल खाणगे तो असी तदे ही एक दूसरे दे नाल कंपैटिबल होवांगे। दिस इज़ नॉट नैसेसरी। नाउ हुण असी किस लैवल के उत्ते एक दूसरे नाल इकट्ठे हो सकते हैं या जिहड़ी साडी एकता है वो किस लैवल पर होंदी है, वो सिर्फ आत्मा की लैवल पर होंदी है। ओनली दिस इज़ द सोल, आत्मा विच बाइंड्स ऑल ऑफ अस टुगैदर। और यह जिहड़ी आत्मा है यह रेत के जरे तो लैके सूरज तक एक है, यह कीड़ी तो लैके हाथी तक एक है। सो जिहड़ी आत्मा है उहदे करके साडा एक दूसरे दे नाल एकता हर लैवल के उत्ते बनी हुई है। नाउ इनू मैं एक ब्यूटिफुली एक एनैक्डोट नाल जिहड़ा कि ट्रू लाइफ एनैक्डोट है उहदे नाल एक्सप्लेन करदी हाँ कि असी यूजली सिर्फ अपने विचारां दे लैवल के उत्ते, अपनी सोचनी के लैवल के उत्ते, अपनी यादां के लैवल के उत्ते अपने रिश्तिਆਂ ਨੂੰ डिस्कार्ड कर देने एंड वी आर अल्यूशन फॉर सम imaginary beings with which we think
we might have been compatible, and with this spouse or with this person or with the people around us, because ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਕਡ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਏਮ ਆਫ ਲਾਈਫ। Human life, apart from your occupational goals, apart from your family goals, the aim of human life or aim of ਜੀਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਵਿਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਣੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਬੀਆ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਹਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਸਨ ਰਾਬੀਆ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਬੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਇਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਿਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬੀਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਡ ਐਟ ਦਾ ਥਰਡ ਲੈਵਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੋਟਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਅਡੋਪਟਿੰਗ ਦਿਸ and trying to be smart to first follow that intellectual approach, and secondly let's grow, let's be aware, let's live consciously so that we can really reach till our param jeevan, which will take us many steps towards the happiness goal. Thank you.